वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरिंदर सिंह। खबरों की शुरुआत कर लेंदे हां हैडलाइनस दे नाल। बुशरा बीबी की मैडिकल जांच करवाउण दे लई पटीशन उत्ते नहीं हुई सुनवाई। पीटीआई ने लाया दोष, कहा बुशरा बीबी नूं जेल दे विच दिता गया जहर वाला खाना। रूस दे विच चंगियां नौकरियां दा लालच दे के जंग दे मैदान विच भेजे गए कई भारती फसे हुए लोगों ने भारत सरकार नूं कीती मदद की अपील। जूलियन असांजे की अमरीका हवालगी दे नाल जुड़े केस की सुनवाई लंडन हाई कोर्ट दे विच जारी। असांजे दे हमायतियां ने विकीलीक्स दे बानी नूं अमरीका हवाले करन दा कीता विरोध। वेनेजुएला दे विच एक गैर कानूनी सोने की खान हुई ढह ढेरी। 14 लोगों की दर्दनाक मौत, अजे भी कईयां दे खान अंदर दबे होण दा खदशा। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। पाकिस्तान के साबका प्रधानमंत्री इमरान खान की भैन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट विच एक पटीशन दायर करके खान की पत्नी बुशरा बीबी की मैडिकल जांच करवाउण की अपील की सी। पीटीआई के वकील नईम पंजूठा ने अज मीडिया के मुखातिब होंदियां कहा है कि उन्हां दी पटीशन उत्ते हाई कोर्ट वालों सुनवाई नहीं की जा रही ते ना ही बुशरा बीबी का मैडिकल चैकअप सही ढंग नाल कीता गया है। जिक्रयोग है कि बुशरा बीबी नूं उन्हां दे पति दे इस्लामाबाद स्थित घर दे विच रखिया गया है। इस घर के एक हिस्से नूं जेल दे विच बदल दिता गया है, जदों कि इमरान खान रावलपिंडी की अडियाला जेल दे विच बंद ने। पीटीआई ने दोष लाया कि बुशरा बीबी नूं एक हफ्ता पहला रसायन युक्त भोजन खुआया गया सी, जिस कारण उन्हां दे गले अते ढिड दे विच जलन महसूस हो रही है। कि मुलाकात हमारी कोई आधा पौना घंटा जारी रही है। जो इन्होंने बताया बिल्कुल ये ठीक बता रही हैं। और उन्होंने बताया कि पहले दिन जो मेरा रोज़ा था तो मुझे खाना दिया गया, उसमें मिर्चें थी। मैंने खाना जो है वो खाया, कंप्लीट किया। लेकिन जूँ ही मैंने नमाज़ पढ़ी तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया वहाँ नमाज के अंदर ही वहाँ पर नमाज अदा करना। और जब मैं जो है मेरी आँखों में पानी शुरू हो गया, नाक में पानी शुरू हो गया। और वाज़ह तौर पर बताना चाहता हूँ कि जो ऑफिसर थे ऊपर खड़े हुए, उन्होंने आकर उनसे पूछा कि खाना ठीक था, तो मैंने कहा जी ठीक था, मिर्चें थीं। कहते हैं नहीं बिल्कुल ठीक था। उन्होंने कहा जी बस मिर्चें थीं। कहते हैं हाँ मुझे पता है मिर्चें थी। तो उन्होंने कहा फिर पूछ क्यों रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने बताया कि जब खाना खाया जाता है तो उसके बाद मेरे जो होंठ हैं वो वाइट हो जाते हैं, और जो एसिड जैसे एक कोई चीज़ दी जाती है उसके अंदर कोई चीज़ मिलाकर, तो खाने के अंदर वो चीज़ जो एसिड है वो दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मेरी जो तबीयत है वो नासाज हुई। और उन्होंने कहा कि मैं सुबह मतलब उठी हूँ तो मेरा गला जो है वो उसके अंदर इस तरह से छाले बने हुए थे कि मैं सुबह नाश्ता नहीं कर पाई, और शाम मैंने वो जो है वो उबले हुए चावल जो हैं वो खाए हैं। और इसी तरह से वो जो खुराक है वो मुझे दी जा रही है। मेडिकल के हवाले से बड़ा वाज़ह तौर पर बताना चाहें कि मेडिकल के हवाले से जो हमने दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर अभी तक कोई सदेबाब नहीं हुआ और कोई टीम नहीं भिजवाई जा रही। देखें, जो सेहत का मामला है, किसी के जान के हवाले से मामला है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब तक जो है वो क्यों नहीं उनको मेडिकल की जो डॉक्टर की हमारी जो टीम है या पिम से जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या डॉक्टर फैसल उनके मौलिज हैं, उनको क्यों नहीं इजाज़त दी जा रही। यही वजह है कि पता ना चल जाए। वहाँ पर एक टीम भिजवाई गई है चेकअप करने के लिए। उन्होंने कहा है कि वो जो मशीन ब्लड प्रेशर के हवाले से गई थी वो वैसे ही ख़राब थी, क्योंकि उन्होंने वो ब्लड प्रेशर मेरा कहा कि हाई है। तो मैंने कहा मेरा तो ज़िंदगी में कभी हाई नहीं रहा। तो साथ एक दो और लोगों के चेक किए तो उन्होंने कहा कि सबके ही हाई बता रही, क्योंकि वो मशीन ख़राब थी। मेरे इसरार करने के बावजूद उन्होंने ज़बरदस्ती जो वो रिपोर्ट लिख कर दे दी कि इनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है। अब बात यह है कि इस तरह से उनको जेल में ये जो सब जेल करार दी गई है उनकी मर्जी के बगैर, और हाई कोर्ट में एक जो वो बहाना बना रहे हैं कि सिक्योरिटी के खदशात हैं जेल के अंदर, और ये बहाना बना रहे हैं। वेनेजुएला दे विच एक गैर कानूनी तौर उत्ते चलाई जा रही सोने की खान के ढह ढेरी होने कारण घट्टो घट्ट 14 लोगों की मौत हो गई है।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 11 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਾਂਜੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਾਂਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇਕਵਾਡੋਰ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਜਲਾਵਤਨੀ ਹੰਢਾਈ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ 5 ਸਾਲ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸਾਂਜੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। A day of legal arguments, but really what it was an indictment of a rogue agency, the Central Intelligence Agency, which pops up in each of the arguments. Whether it was Julian exposing their torture program and their involvement in illegal killings, or their own plots to murder him. He lost the plot, and then he instrumentalized his agency to go after a media organization, to plot the murder of a journalist and to imprison a publisher in London. They lost the plot. In Iraq and Afghanistan, the torture program that European countries willingly participated in. Whatever happens in the coming days, it's now been aired in court. The murder plot, the political motivation coming out of Mike Pompeo's obsession with killing Julian. Who remembers collateral murder? Who can forget that grainy black and white image of an American attack helicopter gunning down innocent Iraqis and Reuters journalists? Who can remember that? And we have this madness that the man who told the truth, who provided hard evidence of US war crimes, he's the one in front of a court. It should have been the pilots of that helicopter. But some common sense has broken out. At least now the Australian Parliament has finally voted. The Australian Prime Minister has finally stood up and given a clear, strong signal to the Americans that enough is enough. Regardless of what you think of Julian, this matter must be brought to an end. The extradition must be dropped. The charges must be dropped. He must be busted out of Belmarsh. He must be allowed to be reunited with his family. Because Julian Assange is the hero here, not the villain. ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੁਲਮਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਗੁਲਮਬਰਗ ਦੇ ਅਫਰਾਵਾਦ ਪੀਕ ਦੇ ਖਿਲਾਨ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 3 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਬਰਫ਼ ਹੇਠ ਫਸੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਕਾਈਅਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਰਫ਼ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸੋਨਮਬਰਗ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ करना पै रहा है। तकरीबन 12 बजे मुझे वहाँ पे एक कॉल आया, जो लोकल एक स्केट था वहाँ पे तनवीर अहमद जो अपने ग्रुप के साथ था, उसने मुझे कॉल किया कि यहाँ पे साइज 3 का एवलांच यहाँ पे हुआ है, जो वाटरफॉल नाला का है।
तो जब एवलांच के बाद उसने मुझे डिटेल देते रहे वो, तो कुछ मिनटों के बाद उसने कहा एक का यहाँ पे डेथ हुआ है, तो बाकी लोगों का हम सर्च इस वक्त जारी है। तो उसके बाद उन्होंने 4-5 लोगों को सर्च जो निकाला, जिंदा निकाला है। तो अभी वहाँ पे लोकल स्केर्स है, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। तो जब भी मेरे पास और कोई डिटेल आएंगे तो मैं आप लोगों से वो शेयर जरूर करूँगा। अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट चुके हैं, तो अभी हमें और कुछ भी और बाकी काम भी करने हैं। तो बाकी जो भी जो डेथ हुई है वो फॉरेनर है जिसकी डेथ हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो गंडोला डिपार्टमेंट है, स्केर्स को यहाँ के जो लोकल स्केर्स है गाइड्स, उनके लिए वो उन्होंने फ्री गंडोला ख़त्म किया था। तो अब टिकट निकालने के बाद ही हमें टूरिस्ट के साथ अलाउ किया जाता है, लेकिन किसी गाइड को उतना रेट नहीं होता, 3,000-4,000 रेट होता। अगर वो दिन भर 4-5 हज़ार का टिकट निकालेगा तो फिर वो क्या कमाएगा। तो आज गाइड न होने की वजह से आज एक कैजुअलिटी हुई है। इसका जिम्मेदार मैं आप खुद गॉड नोज बट हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, लेकिन मैंने इशारे में कहा कि यहाँ पे क्या हुआ है। मंजूर साहब ये बताइए, जो ये कहा कि क्योंकि इससे पहले भी जो है मिसिंग हुई थी एक जो इंडिया के कुछ यहाँ पे जो भी मिसिंग हो, यहाँ पे लोकल्स के, विदाउट लोकल्स यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं हो जाएगा। यहाँ पे जब देखो आज खेलो इंडिया चल रहा है, अगर हम यहाँ पे नहीं होंगे, ये गेम भी कंप्लीट नहीं हो जाएगा लोकल्स की हेल्प से। मंजूर साहब ये बताइए, जो डेथ हुई है जिसके स्केर की, वो किस कंट्री का है, कुछ उसका कुछ अभी कंफर्म है। वो भी डेड बॉडी हमने निकाला थे, लेकिन वो फॉरनर है, नहीं वो ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 4 ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। इन्हां विचों एक नौजवान हैदराबाद का रहने वाला दस्सिया जा रहा है, जबकि 3 नौजवान केरला के रहने वाले ने। नौजवानों ने वीडियो भेज के मदद की अपील की है और अपने नाल हुई धोखाधड़ी का खुलासा भी किया है। मैं रशिया आया था जॉब करने के लिए एजेंट के थ्रू। एजेंट का नाम है बाबा और उसका यूट्यूब पे चैनल है बाबा ब्लॉग्स। उसने हमको बताया था कि तुम लोग का जॉब रहेगा सिक्योरिटी का। उसने हमसे सिक्योरिटी का जॉब बोल के और 3 लाख रुपए लिया हमसे। 3 लाख रुपए लेके हमको, और हम लोग रशिया आने के बाद वो हमको आर्मी में डाल दिया। हम लोग 4 दोस्त लोग मिल के लगाए थे। दुबई में उसकी ऑफ़िस है, उसके ऑफ़िस पे जाके बात करके लगाए थे हम लोग। उसने फिर भी बताया कि सिक्योरिटी की जॉब है। इधर आने के बाद हमको मिलिट्री में डाल दिया है। टोटल हम लोग इंडिया से 6 आए थे, 4 हम दोस्त लोग हैं और 2 अननोन है, एक गुजरात से और एक कश्मीर से। तो देख लिए आप, मेरे 2 दोस्त लोग से भी बात हुई है और एक जो मेरा दोस्त है वो हमसे अलग हो चुका है। अभी वो किधर डाला है, उसको क्या है हमको कुछ पता नहीं है, अता ना पता वो कौन सी जगह पे, कुछ न्यूज़ नहीं है। अभी हम लोग को फिर इधर से किधर लेके जाएंगे हम लोग को वो भी नहीं मालूम है। और ये लोग इतना भी होने के बाद भी हम लोग को बोल रहे हैं, एजेंट लोग को हम लोग को आर्मी में डाला है, तो तभी भी वो बोल रहे हैं कि नहीं तुम लोग को बॉर्डर पर नहीं लेके जाएंगे, तुम लोग की जॉब सिक्योरिटी ही रहेगी, तुम लोग की ट्रेनिंग चल रही है, ऐसा वैसा बता रहे वो लोग। ये देखो हम लोग की हालत देखो, अपने कपड़े देखो, अभी सामने पूरा हम लोग आर्मी के कपड़े पहने हुए देख रहे हैं आप लोग। ये देखिए। इन्हां विचों तेलंगाना के नारायणपेट जिले का रहने वाला मुहम्मद सूफियान अपने परिवार को भेजी गई वीडियो के विच मिन्नतां करदा देखा गया। इस दे विच ओह कह रहा है कि किरपा करके सानू बचाओ, असीं उच्च तकनीकी धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। फौजी वर्दी पहने सूफियान ने कहा है कि उसनू यूक्रेन के नाल रूस की चल रही जंग विच लड़न लई मजबूर किया जा रहा है। उसके साथ 3 लोग गए थे, एक यूपी का है, एक कश्मीर का है। ये तीनों लोग जो है बाबा ब्लॉग्स के जरिए गए थे। बाबा ब्लॉग एक यूट्यूब चैनल है जो दुबई से ऑपरेट करता है, फैसल खान। उसके जो सब एजेंट्स है इंडिया में, सूफियान और पूजा, ये बम्बई से ऑपरेट करते हैं। ये लोग सूफियान, पूजा, बाबा तीनों के कांटेक्ट में थे। ये इनकी फर्स्ट बैच थी जो 12 नवंबर को यहाँ से गई थी, जो मॉस्को 12 नवंबर को पहुंची थी और 13 नवंबर को इनका एग्रीमेंट हुआ था। जब एग्रीमेंट हुआ था तो ये बताया गया था कि इनको मिलिट्री हेल्पर की जॉब है, जैसा कि बाबा ब्लॉग्स में बताया था कि उन्हें हेल्पर की जॉब रहेगी। आपको 6 महीने में आपका PR बनेगा, 1 साल में आपको रशियन पासपोर्ट मिलेगा, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएंगी। ये बच्चों को झूठे सपने दिखाया हो और एक बच्चे से 3-3 लाख रुपए चार्ज किया।
जब ये फर्स्ट बैच गई थी उसके दूसरे दिन एग्रीमेंट करा के इनको मॉस्को के पास कोई मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर लेके गए, वहाँ पर मिलिट्री का ड्रेस वेपन्स ये वो दे के उनको ट्रेनिंग दी गई। जब ये बच्चे कंफ्यूज हो गए कि हम हेल्पर के जॉब पे आए और हमारे को ये ट्रेनिंग दे रहे, क्या है ये बोले, तो जब से एजेंट उनको मिसगाइड करा कि ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, आपको थोड़े दिनों की ट्रेनिंग रहेंगी है, उसके बाद आपको वही करना है जो आपके वादा किया गया है हेल्पर का। फिर वहां से एक 500 किलोमीटर लग गए, वहां 10 दिन ट्रेनिंग दी। इस दौरान आल इंडिया मजलिस ए इतिहाद उल मुसलमीन ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਅਵੇਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इन पीड़ित परिवार के जिम्मेदारों ने मुझसे मुलाकात की तो मैंने दिसंबर के महीने में हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब को लेटर लिखा। फिर हमारे भारत के जो एम्बेसडर रशिया में हैं उनको मैंने लेटर लिखा और इनके फैमिलीज बहुत परेशान हैं। और जो एजेंट्स हैं, इन एजेंट्स ने, एक एजेंट तो बैठा हुआ है दुबई में और उसका नाम है फैसल खान और बाबा व्लॉग्स के नाम से वो एक चलाता है। फिर एक सूफियान है, ये मुंबई का है, और एक पूजा है, ये भी मुंबई की है। इन तीनों ने इन बेरोज़गार नौजवानों की बेरोज़गारी का फ़ायदा उठाकर इनको धोखा देकर रशिया भिजाकर इनको वहाँ पर यूक्रेन की जंग के मैदान में पहुँचा दिया। और जो इंडिया के एजेंट रशिया में है, रमेश उसका नाम है और एक मोइन है। तो मैं भारत सरकार से, ख़ास तौर से हमारे देश के वज़ीर आज़म जनाब मोदी साहब से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रशिया की हुकूमत से बातचीत करके इन 12 नौजवानों को सेफली वापस भारत को बुलाएं। इनके परिवार के लोग बहुत परेशान हैं। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਮ ਕੀ ਤਹਿਤ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ 6 ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 369 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। What we're announcing today is off-site downtown Oakland, an additional 41-unit project, $14.3 million. What's interesting about this, and it goes to Supervisor's point and I think more broadly our generic broad concern, and that is it's not just a capital investment. We need to seed some of the operational supports so we provide a sense of community and place and continuity and confidence for neighbors that this is an added value. This is not a burden for the community. So that project we're announcing today here in Oakland is 14.3, not just 12.3. That's the capital. The $2 million is for ongoing operating investments to help support the whole person model, to support the issues that underlie why these units are needed in the first place. So that's the advancement, that's the announcement here today. Now you say, well, you only got $138 million left. You know, it's nice you've been able to get 71 or so thousand people off the streets, but it's not good enough. I drive around, I see what I see, everybody's angry about it, I understand. And that's why it's absolutely critical that people support Proposition 1. Because Proposition 1, it's on the ballot in just a matter of weeks, provides an additional $2 billion specifically to continue the success of this program, to continue the streamlining reforms that are part of this program that allow us to site buildings like this in real time, to continue to do more, yes, with less, $203,000 per key. That's the cost of the state's investment in this program. So we're fast tracking the time to delivery. We're taking existing properties, converting them, and we're doing it at a cost the likes of which we've never been able to advance in our state's history. So we want to replicate success. We want to move away from the areas where we're falling short. And so what Proposition 1 does, it provides minimum
$2 billion, and I say minimum because it also seeds $1 billion ongoing each and every year for housing at all types of all stripes. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਅਰਾਈਵਕੈਨ ਐਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Continue to be ongoing investigations, both external and otherwise, into the contracting process. It is obvious that the contracting process rules were not followed in this case, and we need to make sure that there is accountability and transparency around that. But let us remember that during the pandemic, we were reaching out to try and keep people safe, keep people alive, make sure that our economy didn't falter at a time where everything was in question. Even in those most difficult times, we need to make sure the rules were followed. When public servants in this case did not follow the rules adequately, there are investigations and there will be consequences. We have, over the past number of years, delivered $2.4 billion in military, committed $2.4 billion in military aid to Ukraine, delivering things like artillery shells, vehicles, non-lethal weapons, non-lethal equipment, along with weapons, and we're going to continue to be there to do more. It is a shame to see the Conservative Party turning its back on Ukraine by standing against the economic opportunities of the renewed Canada-Ukraine free trade deal. But this government will continue to be there to stand with Ukraine and deliver more of the necessary equipment to continue their fight against Russia, which they're doing to protect their own territory, but they're also doing to protect the values and principles of democracy that underpin all of our free societies. Supports for housing, whether it was with the Rapid Housing Initiative, whether it was with a range of other things we've done to create emergency and rapid housing. This is about building now and for the future as well. People know you can't build in an apartment building. ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। After 8 years of Justin Trudeau and the NDP, housing costs have doubled across Canada. In fact, the average rent has doubled, the average mortgage payment has more than doubled, the needed down payment for the average home has doubled. Justin Trudeau has inflated the cost of everything by printing $600 billion of cash, causing inflation, which bumps up interest rates and now forces Canadians into the prospect of losing their homes. 2 million people line up at food banks in images that are reminiscent of the Great Depression after 8 years of Trudeau's taxes and inflationary policies. Yesterday, he joined with NDP Premier from BC, who is probably the worst housing record of any politician on earth. Literally, look at the prices. Vancouver is now the third most expensive housing market in the world, comparing median income to median house prices. Check it on demographia.ca for yourself. This is because Justin Trudeau and the NDP have printed cash to inflate costs, and they've blocked construction by preventing people to build through bureaucracy and taxes. This, by the way, has been very good for land speculators, because if you are one of the lucky few billionaires that own plots of land that are zoned and permitted to build on, your land is artificially inflated by the fact that you have no competition, because all the other places that competitors would build are blocked off by local government gatekeepers. Great for the very rich. Thank you very much to the NDP and Liberal Socialists for stuffing the pockets and the faces of the billionaires
while screwing over the middle class and causing, for the first time in Canadian history, that young working class kids and immigrants cannot even afford the prospect of ever owning a home. It now takes 25 years to save up for a down payment for the average family in Toronto. Before Trudeau, you paid off a mortgage in that time. After 8 years of Trudeau. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।